इस कार्यक्रम में बच्चों ने संस्थान के हर्बेरियम म्यूजियम को भी देखा। इसमें भारत के विभिन्न भागों से एकत्रित किए गए पौधों, जानवरों और खनिजों के नमूनों को एकत्र किया गया। यह म्यूजियम छात्रों का शिक्षकों, अनुसंधानकर्ताओं होता है और बाल वैज्ञानिकों के खेल में ज्ञान का भंडार है, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों का मस्तिष्क इसी को सार्थक और कोमल होता है। खेल खेल में विज्ञान पर आधारित खेल में एक फिल्म बच्चों को दिखाई प्राप्त कर लेते हैं। संस्थान की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुमन ने विज्ञान पर आधारित स्वतंत्रता के एक फिल्म वर्ष को भाषित करते हुए वैज्ञानिकों के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुमन ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को परिभाषित करते हुए पेड़ पौधों वैज्ञानिकों के जीवन से जुड़ी और आम प्रेरणादायक स्मृतियों को फिर से जीवन बताया। कोविड महामारी से पौधों की सावधानियों से और बच्चों को अवगत कराने के लिए एक फिल्म बच्चों को दिखाई गई। कोविड महामारी से बचाव और सावधानियों से बच्चों को अवगत कराने के लिए एक फिल्म बच्चों को दिखाई गई। संस्थान की निदेशक प्रोफेसर रंजना अग्रवाल ने इस अवसर पर अपने विचार रखे। जिज्ञासा एक प्रोग्राम है CSIR का, जिसके माध्यम से हम केंद्रीय विद्यालयों के बच्चों को CSIR की लैब से जिज्ञासा से रूबरू करा CSIR का। लेकिन इसके आज का कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालयों के बच्चों को विशेष CSIR की लैब से बुला, क्योंकि आज हमने उन बच्चों को अपने, लेकिन आज का कार्यक्रम किया है अनूठा कार्यक्रम जो कि मुख्य धारा से पीछे छूट गए, क्योंकि आज हमने कहीं ना कहीं बच्चों विषम अपने के कारण संस्थान में वो एक वंचित जो कि मुख्य धारा से पीछे वर्ग से संबंध रखते ना कहीं कुछ विषम परिस्थितियों के कारण बहुत कम मौका मिलता है कि वंचित केंद्रीय वैज्ञानिक वर्ग से संबंध रखते हैं। तो आज उन बच्चों को बहुत कम मौका मिलता है कि विजन तरह की केंद्रीय वैज्ञानिक संस्थानों उन्होंने किया है और एक रोशनी फाउंडेशन आज जो कि इन सब तरह के बच्चों को आफ्टर हमारा डिवीजन है आउटरीच और हैंड होल्डिंग करते हैं, उन्होंने किया है अपने रोशनी फाउंडेशन प्रगति कर सके। सब बच्चों को आफ्टर स्कूल केयर देते हैं और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रमों से उन बच्चों की प्रगति कर सके, बहुत बच्चों को कॉन्फिडेंस जनरेट होगा भविष्य के। मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस तरह के इस अवसर पर संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक श्री हसन जावेद खान ने अपने विचार रखे। मेरा मानना है कि इस अवसर पर संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक श्री हसन जावेद खान ने अपने विचार रखे। मेरा मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम बराबर जाके रहने चाहिए। स्कूल के बाहर भी बच्चे जो कुछ तो एजुकेशन के अलावा जो एक कन्वेंशनल एजुकेशन है उसके अलावा जो आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन जाके सीखते हैं, वो हमारी कोशिश है कि हम जिज्ञासा प्रोग्राम एजुकेशन के अलावा जो एक कन्वेंशनल एजुकेशन है उसके अलावा जो आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है कि एजुकेटिव, वो हमारी कोशिश ज़्यादा हम जिज्ञासा हमारे कार्यक्रम इंस्पायरिंग होने प्रोवाइड करें। आउटरीच विभाग के प्रमुख हमारा ये भी मानना है कि एजुकेटिव से ज़्यादा हमारे कार्यक्रम इंस्पायरिंग होने बच्चों को आउटरीच विभाग के प्रमुख CSIR ने अपने विचार रखे। आने का मौका दिया। संसाधन विहीन ये बच्चों को बहुत सी CSIR अच्छा प्रोग्राम प्रयोगशाला में आने का मौका इसके अंदर ये एक अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, उनको अच्छा प्रोग्राम करके जिसके अंदर विख्यात हर्बेरियम जो अंडर प्रिविलेज और स्पेसिमेन को उनको दिखाया गया। रोशनी फाउंडेशन से आए शिक्षकों ने भी इस अवसर पर अपने विचार साझा किए। रोशनी फाउंडेशन से आए बच्चों ने आए शिक्षकों ने भी जुड़े इस अवसर पर अनुभव बताए, विचार साझा किए। रोशनी फाउंडेशन से आए बच्चों ने भी इस कार्यक्रम से जुड़े अपने अनुभव बताए। मैं आगे जाके आईटी से आए, मुझे अच्छा लगा और यहाँ देश के लिए कुछ करना छोटी छोटी मूवी तो मैम मुझे यहाँ पर आके बहुत सारी चीज़ें देख दिया, हमें देखने को मिली कि मैम मुझे अच्छा लगा और ये सब बहुत अच्छा लगा। छोटी छोटी मूवी दिखाई और बताया, इंट्रोडक्शन दिया हमें कि मैम इसके लिए मेरे को ये सब बहुत अच्छा लगा। दिखाई और बताया
और बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जगाने के लिए CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार समाज को विज्ञान से जोड़ने के लिए और 17 सितंबर वैज्ञानिक 2021 को जगाने के लिए आउटरीच विभाग द्वारा पहले आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोशियो इकोनॉमिक 17 सितंबर 2021 के तहत रोशनी फाउंडेशन में पहले बच्चों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया। सोशियो इकोनॉमिक इस कार्यक्रम में बच्चों ने संध्या के तहत हर्बेरियम म्यूजियम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भारत के विभिन्न भागों से एकत्रित किए गए। इस कार्यक्रम में बच्चों ने संस्थान और खनिजों के हर्बेरियम म्यूजियम एकत्रित किया गया। इसमें भारत के विभिन्न भागों से एकत्रित किए गए अनुसंधानकर्ताओं, जानवरों और बाल वैज्ञानिकों के नमूनों को ज्ञान का किया गया। यह बच्चों का मस्तिष्क निर्मल और कोमल अनुसंधानकर्ताओं, बच्चे बाल वैज्ञानिकों के लिए ज्ञान का प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों का मस्तिष्क निर्मल खेल में विज्ञान पर आधारित बच्चे फिल्म बच्चों को दिखाई गई प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। संस्थान की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुमन रे ने खेल में विज्ञान पर आधारित एक फिल्म बच्चों को दिखाई गई। वैज्ञानिकों के संस्थान की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुमन रे ने फिर से स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को पेड़ पौधों के औषधीय वैज्ञानिकों के जीवन में प्रेरणादायक के विषय में बताया। फिर से जीवन कोविड महामारी से बचाव और पेड़ पौधों से औषधीय बच्चों को अवगत कराने के लिए एक फिल्म बच्चों को दिखाई बताया। कोविड महामारी से बचाव और सावधानियों से बच्चों को अवगत कराने के लिए एक फिल्म बच्चों को दिखाई गई। संस्थान की निदेशक प्रोफेसर रंजना अग्रवाल ने इस अवसर पर अपने विचार रखे। कोविड महामारी से जिज्ञासा एक प्रोग्राम है CSIR जिसके माध्यम से हम केंद्रीय विद्यालयों के बच्चों को CSIR की लैब्स में बुलाकर उनको साइंस से रूबरू जिज्ञासा एक प्रोग्राम है CSIR। लेकिन आज का कार्यक्रम के माध्यम से हम केंद्रीय विद्यालयों के बच्चों को CSIR की आज हमने उन बच्चों को अपने संस्थान में आमंत्रित किया। आज का कार्यक्रम जो कि मुख्य धारा से पीछे छूट गए कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं कुछ विषम परिस्थितियों के कारण अपने संस्थान में आमंत्रित किया है जो कि मुख्य धारा से पीछे छूट संबंध रखते हैं। कहीं ना कहीं कुछ विषम परिस्थितियों के कारण मिलता है कि वो इस तरह की वंचित वैज्ञानिक संस्थानों में आकर वर्ग से संबंध रखते हैं। बहुत सुंदर पहल तो उन बच्चों को हमारा डिवीजन मिलता है कि वो इस तरह की केंद्रीय वैज्ञानिक संस्थानों में रोशनी फाउंडेशन जो कि इन सब तरह के बहुत सुंदर पहल स्कूल केयर देते हैं। हमारा डिवीजन हैंड होल्डिंग करते हैं ताकि वो आगे अपने जीवन में किया है और एक प्रगति कर सके उन बच्चों की इन सब तरह के बच्चों को क्या स्कूल केयर मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रमों से आगे अपने बच्चों के अंदर और भी प्रगति कर सके, कॉन्फिडेंस जनरेट होगा आज हमने भविष्य के आने वाले वैज्ञानिक और मुझे ऐसी उम्मीद इस अवसर पर संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक श्री हसन जावेद खान ने अपने विचार रखे। और वो भविष्य के मेरा मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम इस अवसर पर संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक श्री हसन जावेद खान ने अपने विचार रखे। बहुत ज्यादा वो मेरा मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम में जाके सीखते हैं, बराबर होते रहने बाहर भी सीखते हैं, क्योंकि बच्चे एजुकेशन के अलावा जो कन्वेंशनल एजुकेशन है उसके अलावा जो आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है इंस्टीट्यूट्स में जाके सीखते हैं। हमारी कोशिश है कि हम बाहर ऐसा प्रोग्राम के थ्रू तो एजुकेशन के अलावा जो एक कन्वेंशनल एजुकेशन है उसके अलावा ये भी मानना है आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है से ज्यादा हमारी कोशिश है कि हम जिज्ञासा इंस्पायरिंग होने चाहिए, उनको प्रोवाइड करें। विभाग के प्रमुख सीबी सिंह ने हमारा ये भी मानना है कि एजुकेटिव से ज्यादा हमारे कार्यक्रम बच्चों इंस्पायरिंग होने चाहिए। आउटरीच विभाग के प्रमुख सीबी सिंह ने अपने विचार रखे। संसाधन विहीन बहुत बच्चों को अच्छा CSIR की किसी प्रयोगशाला में आने का मौका दिया गया। जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे बहुत ही उनको निष्पक्ष अच्छा प्रोग्राम था। विख्यात के अंदर हर्बेरियम जो अंडर प्रिविलेज्ड स्पेसिमेन को उनको दिखाया गया। निष्पक्ष के रोशनी फाउंडेशन से आए शिक्षकों ने भी इस अवसर पर अपने विचार साझा किए। रोशनी फाउंडेशन से आए बच्चों ने भी इस कार्यक्रम से शिक्षकों ने अपने अनुभव इस अवसर पर अपने विचार साझा किए। रोशनी फाउंडेशन से आए बच्चों ने भी We have just received information that our chief guest is delayed because of some urgent meeting, but shortly he will be here. और बताया मुझे यहाँ पर आके बहुत सारी चीज़ें देखने को देखी मैम, इसके लिए मेरे को मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर आपने छोटी छोटी मूवी दिखाई और बताया, इंट्रोडक्शन दिया हमें। थैंक यू।
कि मैम इसके लिए मैं टेंशन समाज को विज्ञान से जोड़ने के लिए और बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जगाने के लिए CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति समाज को विज्ञान से जोड़ने के लिए 17 सितंबर 2021 को दृष्टिकोण को जगाने विभाग द्वारा CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार आयोजन किया गया। सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तहत को रोशनी फाउंडेशन विभाग द्वारा बच्चों के लिए यह कार्यक्रम आयोजन किया गया। सोशियो इस कार्यक्रम में बच्चों ने संस्थान के हर्बेरियम म्यूजियम रोशनी फाउंडेशन में पढ़ने वाले बच्चों के लिए विभिन्न भागों से कार्यक्रम आयोजित किया गया। पौधों इस कार्यक्रम में बच्चों ने खनिजों के नमूने हर्बेरियम म्यूजियम देखा। इसमें भारत के विभिन्न भागों से अनुसंधान कर पौधों बाल वैज्ञानिकों और खनिजों के नमूनों का भंडार एकत्र किया गया। बच्चों का मस्तिष्क छात्रों और शिक्षक होता है। अनुसंधान कर बच्चे खेल में बाल वैज्ञानिकों के लिए ज्ञान का भंडार है। इसी को बच्चों का मस्तिष्क खेल में विज्ञान पर आधारित एक फिल्म बच्चे खेल में ही प्रारंभिक ज्ञान संस्थान की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सार्थक करती स्वतंत्रता के विज्ञान पर आधारित एक फिल्म बच्चों को दिखाई गई। वैज्ञानिकों के जीवन से जुड़ी संस्थान की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुमन जी ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पौधों के औषधीय गुणों और वैज्ञानिकों के जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बताए को फिर से कोविड महामारी से बचाव और सावधानियों से पौधों के बच्चों को अवगत कराने के लिए आम जनजीवन फिल्म बच्चों को दिखाई के विषय में बताया। संस्थान कोविड महामारी से बचाव और सावधानियों से बच्चों को अवगत कराने के लिए एक फिल्म बच्चों को दिखाई गई। संस्थान की निदेशक प्रोफेसर रंजना अग्रवाल ने इस अवसर पर अपने विचार रखे। जिज्ञासा एक प्रोग्राम है CSIR का, जिसके माध्यम से हम केंद्रीय विद्यालयों के बच्चों को उनको साइंस से रूबरू कराते हैं। जिज्ञासा एक प्रोग्राम है, लेकिन आज का कार्यक्रम एक जिसके माध्यम से हम केंद्रीय विद्यालयों के बच्चों को, क्योंकि आज हमने उन बच्चों को साइंस से रूबरू कराते संस्थान में आमंत्रित किया है, लेकिन आज जो मुख्य धारा से पीछे छूट गए एक विशेष कार्यक्रम कहीं ना कहीं कुछ आज हमने के कारण उन बच्चों को अपने एक वंचित स्थान में आमंत्रित किया है, वर्ग से मुख्य धारा संबंध रख छूट गए हैं। उन बच्चों को कुछ विषम मिलता है कि वो एक वंचित आकर उनको देख सकते वर्ग से आज संबंध रखते पहल, तो उन बच्चों को बहुत कम मौका मिलता है कि वो इस तरह की उन्होंने किया है। वैज्ञानिक रोशनी फाउंडेशन जो कि इन सब तरह के आज बहुत सुंदर केयर देते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं ताकि वो आगे अपने जीवन में उन्होंने किया प्रगति कर सके उन बच्चों को, जो कि इन सब तरह के क्या को मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस तरह की हैंड कर सके ताकि उन बच्चों के अंदर और भी बहुत प्रगति जनरेट हो, बच्चों को भविष्य के आने वाले वैज्ञानिक किया। और इस अवसर पर संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक श्री हसन जावेद खान ने अपने विचार रखे। मेरा मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम बराबर इस अवसर पर संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक श्री हसन जावेद खान ने अपने विचार रखे। मेरा मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम बराबर बचे रहने चाहिए। एजुकेशन के अलावा कुछ कन्वेंशनल एजुकेशन, उसके अलावा जो आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन वो हमारी जाके जिज्ञासा के बाहर भी उनको प्रोवाइड एजुकेशन के अलावा जो कन्वेंशनल एजुकेशन, इसके अलावा जो एजुकेटेड स्कूल एजुकेशन से ज़्यादा वो हमारी कोशिश है कि इंस्पायरिंग प्रोवाइड करें। अपने विचार ये भी मानना है कि एजुकेटिव संसाधन से ज़्यादा हमारे कार्यक्रम इंस्पायरिंग होने चाहिए। अपने विचार रखे।
ये संसाधन विहीन बच्चों को अच्छा प्रोग्राम था। CSIR की किसी प्रयोगशाला में आने का मौका दिया, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे, ये एक बहुत ही निस्पर के अच्छा प्रोग्राम था, विख्यात हंसी के अंदर, और जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको दिखाया गया, उनको निस्पर के रोशनी फाउंडेशन से आए शिक्षकों ने भी इस अवसर पर अपने विचार साझा किए। स्पेसिमेन को रोशनी फाउंडेशन से आए बच्चों ने भी इस कार्यक्रम से जुड़े अपने अनुभव बताए। मैम, मैं आगे जाके IPS बनना चाहता हूँ और देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और मैम, मुझे यहाँ पर आके बहुत सारी चीज़ें देखने के मिली, वो मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर आपने छोटी छोटी मूवी दिखाई और बताया, इंट्रोडक्शन दिया हमें। थैंक यू मैम, इसके लिए मेरे को ये सब बहुत अच्छा लगा। समाज को विज्ञान से जोड़ने के लिए और बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जगाने के लिए CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान में 17 सितंबर 2021 को आउटरीच विभाग द्वारा पहले आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तहत रोशनी फाउंडेशन में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने संस्थान के हर्बेरियम म्यूजियम को भी देखा। इसमें भारत के विभिन्न भागों से एकत्रित किए गए पौधों, जानवरों और खनिजों के नमूनों को एकत्र किया गया। यह म्यूजियम छात्रों, शिक्षकों, अनुसंधानकर्ताओं और बाल वैज्ञानिकों के लिए ज्ञान का भंडार है। बच्चों का मस्तिष्क निर्मल और कोमल होता है। बच्चे खेल खेल में ही प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसी को सार्थक करती खेल खेल में विज्ञान पर आधारित एक फिल्म बच्चों को दिखाई गई। संस्थान की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुमन रे ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को परिभाषित करते हुए वैज्ञानिकों के जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक स्मृतियों को फिर से जीवंत किया। साथ ही पेड़ पौधों के औषधीय गुणों और आम जनजीवन में उनकी उपयोगिता के विषय में बताया। कोविड महामारी से बचाव और सावधानियों से बच्चों को अवगत कराने के लिए एक फिल्म बच्चों को दिखाई गई। संस्थान की निदेशक प्रोफेसर रंजना अग्रवाल ने इस अवसर पर अपने विचार रखे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च CSIR की एक ऐसी प्रयोगशाला है जो समाज और विज्ञान को जोड़ने का काम करते हैं। जिज्ञासा एक प्रोग्राम है CSIR का, जिसके माध्यम से हम केंद्रीय विद्यालयों के बच्चों को CSIR की लैब्स में बुलाकर उनको साइंस से रूबरू कराते हैं। लेकिन आज का कार्यक्रम एक अनूठा कार्यक्रम है, एक विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि आज हमने उन बच्चों को अपने संस्थान में आमंत्रित किया है जो कि मुख्य धारा से पीछे छूट गए हैं। कहीं ना कहीं कुछ विषम परिस्थितियों के कारण वो एक वंचित वर्ग से संबंध रखते हैं, तो उन बच्चों को बहुत कम मौका मिलता है कि वो इस तरह की केंद्रीय वैज्ञानिक संस्थानों में आकर उनको देख सकें। तो आज एक बहुत सुंदर पहल जो हमारा डिवीज़न है आउटरीच और जिज्ञासा का, उन्होंने किया है, और एक रोशनी फाउंडेशन जो कि इन सब तरह के बच्चों को आफ्टर स्कूल केयर देते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं ताकि वो आगे अपने जीवन में प्रगति कर सकें, उन बच्चों को आज हमने अपने यहाँ आमंत्रित किया। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रमों से उन बच्चों के अंदर और भी बहुत कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और वो भविष्य के आने वाले वैज्ञानिक बनेंगे।
इस अवसर पर संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक श्री हसन जावेद खान ने अपने विचार रखे। मेरा मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम बराबर होते रहने चाहिए, क्योंकि बच्चे जो कुछ स्कूल में सीखते हैं उससे बहुत ज़्यादा वो इंस्टीट्यूट्स में जाके सीखते हैं, स्कूल के बाहर भी सीखते हैं। तो एजुकेशन के अलावा जो एक कन्वेंशनल एजुकेशन है, उसके अलावा जो आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, वो हमारी कोशिश है कि हम जिज्ञासा प्रोग्राम के थ्रू उनको प्रोवाइड करें। और हमारा ये भी मानना है कि एजुकेटिव से ज़्यादा हमारे कार्यक्रम इंस्पायरिंग होने चाहिए। आउटरीच विभाग के प्रमुख सीबी सिंह ने अपने विचार रखे। संसाधन विहीन बच्चों को CSIR की किसी प्रयोगशाला में आने का मौका दिया गया। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, जिसके अंदर जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको निस्पर के विख्यात हर्बेरियम और स्पेसिमेन को उनको दिखाया गया। रोशनी फाउंडेशन से आए शिक्षकों ने भी इस अवसर पर अपने विचार साझा किए। रोशनी फाउंडेशन से आए बच्चों ने भी इस कार्यक्रम से जुड़े अपने अनुभव बताए। मैम, मैं आगे जाके IPS बनना चाहता हूँ और देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और मैम, मुझे यहाँ पर आके बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, वो मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर आपने छोटी छोटी मूवी दिखाई और बताया, इंट्रोडक्शन दिया हमें। थैंक यू मैम, इसके लिए मेरे को ये सब बहुत अच्छा लगा। समाज को विज्ञान से जोड़ने के लिए और बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जगाने के लिए CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान में 17 सितंबर 2021 को आउटरीच विभाग द्वारा पहले आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तहत रोशनी फाउंडेशन में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने संस्थान के हर्बेरियम म्यूजियम को भी देखा। इसमें भारत के विभिन्न भागों से एकत्रित किए गए पौधों, जानवरों और खनिजों के नमूनों को एकत्र किया गया। यह म्यूजियम छात्रों, शिक्षकों, अनुसंधानकर्ताओं और बाल वैज्ञानिकों के लिए ज्ञान का भंडार है। बच्चों का मस्तिष्क निर्मल और कोमल होता है। बच्चे खेल खेल में ही प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसी को सार्थक करती खेल खेल में विज्ञान पर आधारित एक फिल्म बच्चों को दिखाई गई। संस्थान की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुमन रे ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को परिभाषित करते हुए वैज्ञानिकों के जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक स्मृतियों को फिर से जीवंत किया। साथ ही पेड़ पौधों के औषधीय गुणों और आम जनजीवन में उनकी उपयोगिता के विषय में बताया। कोविड महामारी से बचाव और सावधानियों से बच्चों को अवगत कराने के लिए एक फिल्म बच्चों को दिखाई गई। संस्थान की निदेशक प्रोफेसर रंजना अग्रवाल ने इस अवसर पर अपने विचार रखे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च CSIR की एक ऐसी प्रयोगशाला है जो समाज और विज्ञान को जोड़ने का काम करते हैं। जिज्ञासा एक प्रोग्राम है CSIR का, जिसके माध्यम से हम केंद्रीय विद्यालयों के बच्चों को CSIR की लैब्स में बुलाकर उनको साइंस से रूबरू कराते हैं। लेकिन आज का कार्यक्रम एक अनूठा कार्यक्रम है, एक विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि आज हमने
उन बच्चों को अपने संस्थान में आमंत्रित किया है जो कि मुख्य धारा से पीछे छूट गए हैं। कहीं ना कहीं कुछ विषम परिस्थितियों के कारण वो एक वंचित वर्ग से संबंध रखते हैं, तो उन बच्चों को बहुत कम मौका मिलता है कि वो इस तरह की केंद्रीय वैज्ञानिक संस्थानों में आकर उनको देख सकें। तो आज एक बहुत सुंदर पहल जो हमारा डिवीज़न है आउटरीच और जिज्ञासा का, उन्होंने किया है, और एक रोशनी फाउंडेशन जो कि इन सब तरह के बच्चों को आफ्टर स्कूल केयर देते हैं, हैंड होल्डिंग करते हैं ताकि वो आगे अपने जीवन में प्रगति कर सकें, उन बच्चों को आज हमने अपने यहाँ आमंत्रित किया। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रमों से उन बच्चों के अंदर और भी बहुत कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और वो भविष्य के आने वाले वैज्ञानिक बनेंगे। इस अवसर पर संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक श्री हसन जावेद खान ने अपने विचार रखे। मेरा मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम बराबर होते रहने चाहिए, क्योंकि बच्चे जो कुछ स्कूल में सीखते हैं उससे बहुत ज़्यादा वो इंस्टीट्यूट्स में जाके सीखते हैं, स्कूल के बाहर भी सीखते हैं। तो एजुकेशन के अलावा जो एक कन्वेंशनल एजुकेशन है, उसके अलावा जो आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, वो हमारी कोशिश है कि हम जिज्ञासा प्रोग्राम के थ्रू उनको प्रोवाइड करें। और हमारा ये भी मानना है कि एजुकेटिव से ज़्यादा हमारे कार्यक्रम इंस्पायरिंग होने चाहिए। आउटरीच विभाग के प्रमुख CB सिंह ने अपने विचार रखे। संसाधन विहीन बच्चों को CSIR की किसी प्रयोगशाला में आने का मौका दिया गया। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था जिसके अंदर जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनको NISCPR के विख्यात हर्बेरियम और स्पेसिमेन को उनको दिखाया गया। रोशनी फाउंडेशन से आए शिक्षकों ने भी इस अवसर पर अपने विचार साझा किए। रोशनी फाउंडेशन से आए बच्चों ने भी इस कार्यक्रम से जुड़े अपने अनुभव बताए। मैम, मैं आगे जाके IPS बनना चाहता हूँ और देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और मैम, मुझे यहाँ पर आके बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, वो मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर आपने छोटी छोटी मूवी दिखाई और बताया, इंट्रोडक्शन दिया हमें। थैंक यू मैम, इसके लिए मेरे को ये सब बहुत अच्छा लगा। समाज को विज्ञान से जोड़ने के लिए और बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जगाने के लिए CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान में 17 सितंबर 2021 को आउटरीच विभाग द्वारा पहले आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तहत रोशनी फाउंडेशन में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने संस्थान के हर्बेरियम म्यूजियम को भी देखा। इसमें भारत के विभिन्न भागों से एकत्रित किए गए पौधों, जानवरों और खनिजों के नमूनों को एकत्र किया गया। यह म्यूजियम छात्रों, शिक्षकों, अनुसंधानकर्ताओं और बाल वैज्ञानिकों के लिए ज्ञान का भंडार है। बच्चों का मस्तिष्क निर्मल और कोमल होता है। बच्चे खेल खेल में ही प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसी को सार्थक करती खेल खेल में विज्ञान पर आधारित एक फिल्म बच्चों को दिखाई गई। संस्थान की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुमन रे ने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को परिभाषित करते हुए वैज्ञानिकों के जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक स्मृतियों को फिर से जीवंत किया।
साथ ही पेड़ पौधों के औषधीय गुणों और आम जनजीवन में उनकी उपयोगिता के विषय में बताया। कोविड महामारी से बचाव और सावधानियों से बच्चों को अवगत कराने के लिए एक फिल्म बच्चों को दिखाई गई। संस्थान की निदेशक प्रोफेसर रंजना अग्रवाल ने इस अवसर पर अपने विचार रखे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च CSIR की एक ऐसी प्रयोगशाला है जो समाज और विज्ञान को जोड़ने का काम करते हैं। जिज्ञासा एक प्रोग्राम है CSIR का, जिसके माध्यम से हम केंद्रीय विद्यालयों के बच्चों को CSIR की लैब्स में बुलाकर उनको साइंस से रूबरू कराते हैं। लेकिन आज का कार्यक्रम एक अनूठा कार्यक्रम है, एक विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि आज हमने उन बच्चों को अपने संस्थान में आमंत्रित किया है जो कि मुख्य धारा से पीछे छूट गए हैं। कहीं ना कहीं कुछ विषम परिस्थितियों के कारण वो एक वंचित वर्ग से संबंध रखते हैं, तो उन बच्चों को बहुत कम मौका मिलता है कि वो इस तरह की केंद्रीय वैज्ञानिक संस्थानों में आकर उनको देख सकें। तो आज एक बहुत सुंदर पहल जो हमारा डिवीज़न है आउटरीच और जिज्ञासा का, उन्होंने किया है और एक रोशनी फाउंडेशन Good afternoon, everyone. It gives me immense pleasure to extend to you all a very warm and gracious welcome on behalf of CSIR-NIScPR for the World Environment Day lecture on the topic Impact of Environmental Imbalance on Weather. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष 5 जून को किया जाता है। इस दिवस का आयोजन पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा उसके संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देने हेतु किया जाता है। हरित पर्यावरण तथा प्रकृति का संरक्षण आज समय की मांग भी है। यदि आज हम अपनी धरती को हरा भरा बनाने का प्रयास करेंगे, तभी हमारी भविष्य की पीढ़ी एक सुखद जीवन जी पाएगी। To deliver today's World Environment Day lecture, we are privileged to have with us Dr. Mrityunjay Mahapatra, Director General of India Meteorological Department, Government of India. Dr. Mahapatra is also affectionately addressed as Cyclone Man of India. Dr. Mahapatra has contributed towards building the capacity of forecasters by organizing more than 25 national and international trainings, workshops, conferences, and more than 120 popular lectures and talks. He contributed towards the documentation of each cyclone since 2008, the development of dedicated website for cyclones, and Cyclone E-Atlas for R&D and confidence building measures. His expertise in cyclone warning helped in better management of cyclones by disaster managers and the public, leading to minimum loss of human lives in recent years. Besides, he has various awards, fellowships and appreciations to his credit. We welcome you, sir, to CSIR-NIScPR. I now request our Director, Ma'am, Professor Ranjana Agarwal, to felicitate Dr. Mahapatra. Now we have our traditional auspicious lamp lighting ceremony. I request the dignitaries on the dais to light the lamp and symbolically inaugurate the program. शुभं गुरुत्वं
शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. Thank you, everyone. Sorry for this inconvenience. I think there was some technical error or something. Now I would like to invite Director Ma'am Professor Ranjana Agrawal to address the gathering with her opening remarks. सभी को नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार, डॉक्टर हसन जावेद खान, डिवीजन हेड ऑफ पॉपुलर साइंस डिवीजन, Dr. Manish Mohan Gore, who is organizing this event, taking the lead, all the scientific technical staff present in the audience. आप सभी का बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे मध्य में डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हैं और मैं उनका दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि पर्यावरण दिवस वो जैसे हमारे होता है कि कोई कोई दिन किसी का विशेष दिन होता है, तो उनके लिए आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे असाइनमेंट्स होंगे। उन्होंने उन सब असाइनमेंट्स में से निस्पर को चुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। और उन्होंने एक बहुत सुंदर बात डॉक्टर हसन जावेद जी से शेयर किया कि आईएमडी का निस्पर के साथ एक अच्छा कनेक्शन है। इनके यहाँ इनके विभाग से जो एक पत्रिका छपती है मौसम, वो किसी समय में निस्पर से निस्केयर से ही पब्लिश होती थी। सो वी आर कनेक्टेड समवेयर। आपका बहुत स्वागत। तो 5 जून जैसे कि पर्यावरण दिवस है, लेकिन कल रविवार था, तो इसलिए आज हम जो अर्लीस्ट हो सकता था उसमें हम 6 जून को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और इस बार का जो थीम है ओनली वन अर्थ, सिर्फ एक धरती। तो जब हम सिर्फ एक धरती की बात करते हैं तो हम पर्यावरण के द्वारा उसको कैसे सुरक्षित रखें उसकी बात करते हैं। तो थोड़ा अगर हम गहराई से सोचें तो प्रकृति ने पूरे धरती पर 8.5-9 मिलियन प्रजातियां इस धरती पर हैं, जिसमें से मानव जाति सिर्फ 1.5 मिलियन के करीब प्रजातियों को आइडेंटिफाई कर पाई है, चिन्हित कर पाई है। बाकी अभी भी अनभिज्ञ हैं हम उनसे। उन्हीं में से एक हम हैं। हम उन्हीं में से एक हैं, लेकिन हमें अपने बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और जो दूसरी सुंदर चीज प्रकृति के बारे में है कि हर जीवित वस्तु चाहे वो प्राणी हो चाहे वो पौधे हो, एनर्जी वो प्रकृति से ही डिराइव करते हैं और एक दूसरे से संबंध है हम सबका, और इसी तरह से जीवन चलता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमने होमो सेपियंस, जो कि एक सिर्फ स्पीशीज है इतने बड़े लिविंग वर्ल्ड में, उसको अपने बारे में गलतफहमी है कि वो है तो धरती है और उसके अलावा और कुछ नहीं। तो हम जितने नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो उन सब नेचुरल रिसोर्सेज में हम अपने को मध्य में रख के बाकी के नेचुरल रिसोर्सेज को बांट लेते हैं, और बाकी जितनी भी प्राणी है उनका क्या होगा इसकी हमें चिंता कम है। और उसी का परिणाम हम आज देखते हैं जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं। तो ये बातें किसी समय में साइंटिस्ट का भी एक छोटा वर्ग करता था। धीरे धीरे वो बातें पूरे साइंटिफिक फ्रेटर्निटी में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में होने लगी। लेकिन आज स्थिति ये है कि एक आम जन भी पर्यावरण को फील कर रहा है कि ये चेंज हो रहा है। जो ग्लोबल वार्मिंग की बातें जो हम टीवी पे सुनते थे, जो हम अखबारों में पढ़ते थे, जो हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ते थे,
आज वो सब बातें हम अपने आप से महसूस करते हैं, तो इसका माने है कि सिचुएशन जो है आज के समय में बहुत अलार्मिंग है। लेकिन अगर हम देखें हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ रिश्ता था वो एक बहुत स्पिरिचुअल रिश्ता रहा, जिसमें हमने सोसाइटी और सेल्फ दोनों को बराबरी का दर्जा दिया। मैं एक मत्स्य पुराण का एक श्लोक पढ़ना चाहूंगी जो कि मुझको बहुत इंस्पायरिंग लगा। दश कोप समावापी, दश वापी समो हृदय, दश हृदय समो पुत्र, दश पुत्रो समय द्रुम। एक पौंड, एक कुएं के जितना, 10 कुएं के जितना एक वापी है, वापी माने पौंड है। 10 पौंड्स के जितना एक रिजर्वायर है, जो कि एक नेचुरल क्रिएटेड वाटर बॉडी है, दैट इज रिजर्वायर। जो वापी है, जो जिसको हम बावड़ी भी कहते हैं, वो ह्यूमन मेड है, वेल भी ह्यूमन मेड है। तो ये 10 कुओं के बराबर एक वापी, 10 वापी के बराबर एक रिजर्वायर और 10 रिजर्वायर के बराबर एक पुत्र। पुत्र माने पुत्री भी है उसमें, कि एक बच्चा जो है वो 10 रिजर्वायर जितना है और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष है। तो ये हमारा फिलॉसफी रहा है कि कैसे, जिसमें सेल्फ भी है। आप देखें जब फैमिली की बात आई तो बेटा की बात आई उसमें, तो फैमिली भी इंटीग्रेटेड है, लेकिन साथ के साथ पर्यावरण भी इंटीग्रेटेड है कि कैसे एक वृक्ष 10 पुत्रों जितना वातावरण को और सोसाइटी को, समाज को दे सकता है। वो 10 परिवारों को पाल सकता है एक वृक्ष जो है, जबकि पुत्र जो है वो एक ही परिवार को पालने का काम करता है। सो दैट हैज बीन आवर फिलॉसफी। पर मुझे लगता है हम अपनी फिलॉसफी से, उस वक्त समस्या क्या थी कि पानी दूर था, इसलिए हमको कुएं निर्माण करने पड़े, इसलिए हमें बावड़ी बनानी पड़ी। आज प्रॉब्लम क्या है, हम सब साधनों को अपने पास लेके आए हैं, लेकिन अब उन सब साधनों की हमको कदर नहीं है कि उस पानी को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे साफ रखें, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखें। अब हम उसको वैल्यू नहीं कर पा रहे क्योंकि इजीली अवेलेबल एट द फुट स्टेप। पर आज के समय जब हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, हम पहले ही कह रहे हैं कि 1.2 डिग्री टेम्परेचर हाई हो चुका है, और अभी जब हम कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो अब हमारा क्लाइमेट को लेके है कि 4 डिग्री से नीचे कैसे इसको मेंटेन करें सो दैट आवर ग्लेशियर्स डोंट मेल्ट, तो मुझे लगता है अब क्योंकि ये हम सब लोग फील कर रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम व्हेन ऑल ऑफ अस शुड कम टुगेदर एंड वर्क फॉर द एनवायरमेंट। आज हमारे साथ डॉक्टर महापात्रा हैं, उनके लिए कहा साइक्लोन मैन। अब इसका साइक्लोन मैन बड़ा जो नाम है वो लगता है कि क्या व्यक्ति ही साइक्लोन लाने में सक्षम है, तो वो उसमें ये कि वो साइक्लोन से हम कैसे मिटिगेट करें उस समस्या को, तो वो चीज। और आज मैं जरूर चाहती हूँ उनके भाषण से, उद्घोषण से हम सबके अंदर एक साइक्लोन जरूर उत्पन्न हो जो कि पर्यावरण को लेके हम सबको बहुत जागरूक कर सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग सो मेनी इनिशिएटिव्स। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा है कि हम 2070 तक जब हम सोच रहे हैं कि कार्बन एमिशन जो है वो 0 हो जाएगा, एंड ही हैज आल्सो एम्फसाइज्ड India's position in the global scenario, like how we are still at the lower pedestal to emit carbon dioxide. But that's not enough. When we are talking of global warming, everyone has to play an important role. And Ministry of Education in the curriculum, in the undergraduate courses, had made it mandatory to have a 6-module course on environmental sciences. तो सब जगह एक बात हो रही है कि सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, इसमें कहीं पर भी कोई द्वंद्व नहीं है, किसी के मन में कोई शक नहीं है। लेकिन नाउ दिस इज द हाई टाइम व्हेन वी जस्ट डू नॉट टॉक, वी कम इनटू एक्शन, बिकॉज जब तक एक्शन नहीं होगा हम धरती को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। और 5 जून को सिर्फ एक दिन पर्यावरण दिवस मनाने से ये हमारा जो मुहिम है ये पूरा नहीं होगा। दिस शुड बी एन एक्टिविटी 24/7, 365 days. So with these brief comments, I would once again like to welcome Dr. Mahapatra for sparing time for us and for all of you to be here and get enlightened with the talk being delivered by Dr. Mahapatra. Thank you so very much. Thank you, ma'am, for your enlightening inaugural address.
Moving forward, I now invite Dr. Mrityunjay Mahapatra to enlighten us with his talk. नमस्कार, शुभ संध्या। मैं आप सभी से पहले क्षमा प्रार्थना करता हूं कि निर्धारित समय की टाइम पर पहुंच नहीं पाया, मगर ये हमारे हाथ में नहीं था। जैसे भी हो, कारण जो भी हो, और फलस्वरूप यही हुआ कि मैं लेट पहुंचा। मैं इसलिए आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूं, और विशेषतः मैडम रंजना अग्रवाल जी से भी क्षमा प्रार्थना करता हूं। Respected Ranjana Agrawal ji, Director NISCAIR, distinguished delegates in the dais, Javed Saab, Manish ji, and distinguished delegates participating in this meeting. At the outset, I extend warm greetings on the occasion of World Environment Day. I congratulate all of you and your family for being aware about the environment, for being a force in the society to bring out a change so that we can move against this adverse impact of the climate change. I will just deliver a small talk, maybe half an hour or so. But the objective of this today's meeting is, Madam has told, that to make ourselves aware about the facts and figures about what is happening with respect to the environment and what could be the repercussions for today and tomorrow. When we say environment, certainly we feel that we are not part of it. It is something which is surrounding all of us, but we are also a part of environment. So anything which is surrounding us, including us, also are the part of environments, be it soil, be it water, be it air, or be it the living beings and non-living beings. So nature by itself maintains a balance among all the components or constituents of the environment. But due to some intervention by the human society, largely, there has been certain changes in the environment. And these changes are not being reverted back, and it is being extended over the period of time always. And even if we do not change anything now, then also its repercussions and impact will continue for the years together in the future, perhaps to our next generations. So therefore, there is the time now, so everyone thinks about it. As all of us know, there has been a lot of discussions, think tanks in the past, and this year we are celebrating 50 years of establishment of United Nations Environmental Program. It so happened in 1972, all the countries came together and decided that we should be aware of the environment, we have to take actions. And all the government bodies in the globe, they felt that yes, something interference is being carried out by almost all the populations, and hence we have to check it. We have to think about certain solutions. And that was the beginning of UNEP. And thereon we have come to the 50 years. And perhaps many of us are at the age around 50. So you can just think about your childhood, and you can think about the environment at that time and now the environment, how the environment has changed over the period of time. Yes, certainly the comfort has increased at the individual level, but at the same time, there has been degradation of the environment, each component of the environment. And as a result, it has also indirectly affected the comfort of us. The comfort is not sustainable. It is becoming threatened by the changes in the environment. So
I will just discuss about in today's talk about the impact on the weather. So how the weather is changing because of these changes in the various components of the environment, which is popularly called as the global warming or the climate change. So we can just and I can operate. Okay, so we will just think about the various aspects. Just let us begin with the basic concept of the entire environment. If I just look at the Earth system, what you find actually, you have got the lithosphere, that is the solid Earth, and then we have got the surrounding atmosphere, that is the gases, the air, and as you know, that is extending up to 300 kilometers. And here we have got the hydrosphere, that is all water, and of course the biosphere. Now, when you think about all these spheres and their interactions, you will find that there are many other components in each of the spheres. For example, if you consider the atmosphere, there are various gases like hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, nitrogen, etc. Similarly, when you consider the hydrosphere, you have got the oceans, you have got the rivers, you have got the ponds, as Madam was telling. So there are various types of hydrological systems which are also interacting with each other. You have got the cryosphere, where you have got the sea ice, you have got the ice over the hill ranges like Himalayan or Eurasian snow covers, and there are many other. So all these phenomena are interacting with each other, and all these interactions are being driven also by the sun. Sun is the source of all types of energy. And when the sun is transmitting energy towards the surface of the earth, all these components are interacting with that energy, and hence the amount of energy which is being received by the surface of earth and the amount of energy which is being emitted by the surface of the earth is also changing for the period of time. And by that way, it is also influencing the rate of evaporations and hence the hydrological cycle. There is a change in the hydrological cycle. So therefore, why it is happening so actually? So apart from all these natural spheres, what we discussed so far, we have got another sphere called as the anthrosphere. Anthrosphere means the activities, anthropogenic activities because of the human beings. And these anthrospheres are coming out because of so many activities. Say, for example, industrial activity, urban activities, also some extent you can say the agricultural activities in the current practice, and transport and many others. So therefore, people always compare the pre-industrial era, that is between before 1850 and the industrial era, how the anthrosphere has changed over the period of time and how it is contributing towards the radiation budget or the heat budget of the atmosphere, and hence the temperature and its impact. Now, if we just look at what is happening over the recent years, because all of us know that there is impact of the climate change because of the increase in anthropogenic gases, mainly the carbon dioxide is the major source, followed by methane, nitrous oxide, nitric oxide, etc., and chlorofluorocarbons, etc. Now, let us look at the carbon dioxide in the recent years, say, for example, 1985 onwards. If you just look at what is finding actually, it is continuously increasing with, of course, there is a oscillations, but there is a rising trend continuously. It is almost from 340 parts per million volume. Now it has come around 415 or 420 parts per million volume from 1985 to 2020 in a span of about 35 years. Similarly, if I just look at the methane, that also you'll find that it has increased also, and there was some kind of plateau in between, then afterwards again it is increasing from 1985 onwards. Generally nitrous oxide, N2O, if you just look at that is also increasing, and it is almost a straight line increase. So what you find actually that there is a continuous increase all these greenhouse gases because of the various anthropogenic activities. The lower diagram is the growth rate.
Now, if you just look at the impact of this, as all of us know that carbon dioxide is such a gas that which can absorb energy. So when outgoing long-wave radiations are emitted from the surface of the Earth, it gets absorbed by the carbon dioxide. And hence, if you've got the more concentration of carbon dioxide in the atmosphere, then temperature of the atmosphere rises. So that is the mechanism. Similarly, with respect to other gases. So as a result, if you just look at the distribution of increase in temperature, rate of increase in temperature in different parts of the globe, you find that, yes, the rise in temperature is more marked over the polar regions and the extratropical regions. In tropical regions, relatively, it is less. But still, what you find actually, there is an increase, and as Madam was telling, that we are already in the plus 1.15 or something like that, we have reached so far. And the prediction is that by next 2 decades, we will reach 1.5 degrees Celsius, which was initially planned to be achieved by the end of this century. So that means there is an accelerator increase in the temperature over the globe. Now, if I just look at the average temperature of the globe, if you just look at that how it is rising, you can see that it is almost actually 1.2 degree Celsius or so, or 1.15 degrees Celsius or so. And you can see that in this diagram, there is a rapid increase since 1970s. So even though there is, it started increasing, but it's a very small in 1850 after that industrial era. But 1970s onward, if you just look at, there is a rapid increase. Now, if I just look at the various regions of the globe, what you find actually, this is comparing Africa, Asia, South America, and Europe, and entire globe. Gray is entire globe. What you find actually in the past 30 years of this century, 1901 to 1930, it was almost marginal within 0.2. And if you just look at Asia, it was less than 0.05 or something like that. Now, it was also reduced 1931 to 1960. From 1961 to 90, it started increasing, and 1991 to 2020, it is further increasing. That means as we are moving ahead and ahead, the rate of increase is increasing. Then another point is that the Asia, which was not a player, significant player towards the contribution of the greenhouse gases, and now you find that it is a major player. 1990, if you just look at Asia is second to that pink color is Europe. So Asia is marching forward because of its increase in developing activity. As you know that there are major countries in Asia like China, India, and Japan, Korea, so which are the big economies. And because of that, you can find out that how the Asia is now competing with Europe in terms of the rise in temperatures. Now, if I just look at what happens because of this, the temperature rising, what will happen because of that? Now, if the temperature rises, there will be 3 types of phenomena. One is that there will be shift in mean temperature. So you can just see the first of diagram, how the mean is shifting. And if the mean shifts, what happens actually on the left-hand side diagram, that so for example, bold line is the current condition and dotted line is the future conditions. If it shifts, for example, say 1 degree, so what happens actually? On the left-hand side, the this type of distribution, the temperature is normally distributed. You will find that this type of curve, on the both sides there will be 2 tails. On the left-hand side, what are you finding actually? That that is moving away from the colder temperature. That means temperature is becoming warmer. That means cold wave conditions will be less because of the rise in temperature. On the right hand side, what is happening actually, the area is increasing towards hotter temperatures. So that means there will be a rise in temperature, means there will be a rise in heat wave conditions. And it is a fact that in recent times, the frequency, duration, and intensity of heat wave has increased. There is another point here that the variability has also increased. That means year-to-year variation in temperature is also increasing. As a result, what happens that you will find that it is not like that every year you will get similar type of heat wave. Sometimes it will be more intense, sometimes it will be less intense. That happens like that. And therefore, you cannot rule out also the cold wave conditions. The cold wave condition will be there in certain years. It is not like that there will be no cold wave conditions because of the impact of the climate change. The third one is that change in symmetry, the symmetry of distribution, that it may not be so much normal distribution, it may also change. So by that way, whatever it is, what we find actually that certainly there is a shift and certainly there is an increase in variability, and hence you can find out more random, more frequent, more intense
and more durable the heat waves. Now, if you just look at the trend in surface temperature, this is for the country as a whole, you will find that the mean temperature of India has increased by about 0.63 degrees Celsius over a period of 100 years. So rate of increase is 0.63 degree Celsius. This is the mean temperature. Mean temperature is the mean of or average of the maximum temperature and minimum temperature taken over the all stations, whatever we have across the country. So by that way, so there is different types of trends in different seasons. For example, if you consider the winter season, it is plus 0.78 degrees Celsius. For pre-monsoon season, it is 0.35 degrees Celsius. Monsoon season 0.34. Post-monsoon is 0.42. That means the rate of increase in temperature over the country is higher in winter season, followed by the post-monsoon season, that is October to December. But that doesn't mean that there is no rise. There is rise in temperature in monsoon, also pre-monsoon season, about 0.35 degree Celsius. So if you consider annual temperature, as I told you, it is mean temperature is rising by about 0.63 degrees Celsius per 100 years, and maximum temperature is rising more. So that means the global warming having the more impact on the maximum temperature in the country, and hence the heat wave conditions. Minimum temperature is 0.26. Now, if I just look at the spatial distribution, how does it look like the trends? Which area is getting more warm and which area is getting less? You can find that most parts of the country are getting warmer. Okay, so this red color indicates the positive trend and the blue color indicates the negative trend. White means no significant trend. So what you find actually, the trend is positive over most parts of the country except few parts in the Gangetic Plains, where you got neither trend or you have the small, that is negative trend otherwise. Now, if I just look at, this is the temperature as I was telling you that how it is changing over the period of time. That is the trend value I told. So this is, I'll just skip it. That just to impress upon that every season has got the rising trend, and this is the minimum temperature trend. And but what I want to mention here that the recent years, if you just look at, as I was telling you, from 1970, after 1970, the rise in temperature has been quite significant. So this is the case of maximum temperature. You can just see that how the maximum temperature is rising. This is the best year of 1981 to 2010 compared to that period. But you find that the temperature was negative, that is, you can say below normal, but now it has become positive in the recent years. And it is worth to mention here that if I consider the highest maximum temperature recorded so far in the mean temperature, so 10 out of 16 highest temperatures has been recorded in the recent 15 years. So as a result, what you find that the heat wave conditions, this is a trend during the period 1961 to 2021, what you find actually, the entire all parts of the country, you can see that you have got the upward red arrow. That upward red arrow indicates there is an increasing trend, and downward red arrow indicates there is a decreasing trend. So what you find actually, major parts of the country, there is a rising trend in the heat wave conditions. Further, even the peninsular India, where we do not usually get the heat wave conditions, in the recent years, what you find that a trend is increasing. Now, cold wave conditions, yes, as expected, cold wave conditions are decreasing, but still there are certain parts like East Central India, northern parts of peninsula, where the cold wave is also increasing. Okay, so this one, sorry. Okay, now let us see what is happening to rainfall in the country. Now, if you just look at the rainfall in the country, perhaps you will find that there is no such trend in rainfall. All India rainfall is not showing any significant trend. It is mainly because the monsoon rainfall, which contributes about 70 to 90% to the total annual rainfall of the country, and that is not showing any trend. It is almost trendless, it is random. Now, this is the case of winter rainfall. You can just find out that winter rainfall, there is a slight trend in winter rainfall, a decreasing trend. It is mainly because of the fact that the western disturbances, the frequency and intensity of western disturbances are decreasing, and rainfall due to western disturbances are decreasing. And winter month mainly we get rainfall because of the western disturbances. So that decreasing trend can be attributed to that.
Otherwise, if you consider pre-monsoon, there is no change. It is because that during pre-monsoon season, we used to get rainfall mainly due to the low pressure systems like depressions and cyclones. And there is no change in frequency of depression and cyclones developing over Bay of Bengal during these years. Arabian Sea, there is an increase in frequency of cyclones, but Arabian Sea cyclones do not come to India very often. They used to go towards Arabia and Africa. So therefore, it does not influence the rainfall activity. So hence, pre-monsoon season, that is March to May, has no trend in rainfall. Now, if you just look at monsoon season, that you find that again there is no trend in rainfall activity. It is almost trendless, and we get about 87 centimeter of rainfall for the country as a whole. Now, post-monsoon season also the similar case. There is no change, and but now if I consider the distribution of rainfall within the season itself, let us consider a monsoon season. We know monsoon season is 1st of June to 30th September, 122 days. Rainfall is distributed. If you ask our childhood friends, they will say that earlier we were getting rainfall spanned over a few days, but nowadays it is occurring just once upon a time. It rains and rains heavily, and total amount of rainfall occurring in the month occurs in a day or two. So that type of phenomenon is occurring now. If you just look at the diagram here, left hand side the dry days, number of dry days, middle one is the number of rainy days, and last one is the right side is the heavy rainfall days. So what you find actually that there is the red arrow mark is the increasing trend and blue arrow mark is the decreasing trend. So what you find actually, if you just for example you go to major parts of the South Peninsula, and then if you just look at the Indo-Gangetic Plains, what you find the number of rainy days are decreasing. That means light rainfall days are decreasing and heavy rainfall days are increasing. So that means when it is raining heavily, and when it is not raining at all. Now let us take a view about different districts of the country. We have got around 730 districts. So if you just find out here what is happening actually, there is blue means it is increasing trend, but significant increasing trend. Red means decreasing trend. So what you find actually that the total amount of rainfall in the recent 30 years, if I consider the decreasing trend, June to September trend, what is finding the major part of the country, you will find that in the districts in the east, central India and eastern India, you will find that there is a decreasing trend. But at the same time, there is an increasing trend over Rajasthan, some parts of northwest India, West UP, Gujarat, and southern peninsula. So that means there is some kind of change in the spatial pattern. So Rajasthan, which was a desert region, there we are expecting the increasing trend in rainfall. Whereas the low pressure systems affected area like Odisha, Jharkhand, Ganges to West Bengal, Chhattisgarh, East UP, there you are Bihar, you are finding a decreasing trend in rainfall in the recent 30 years. Now, if I compare the urban area and rural area, actually, who is being affected more? Then if you compare, what you find actually, the urban area is being affected more by the rainfall. That means what happens actually in the urban area, there is an impact called as urban heat island effect. Because of the increasing concrete structure, the temperature increases by about 3 to 4 degrees Celsius compared to the outside surroundings. So because of the rise in temperature, there will be uplifting of air and hence moist air and convection, hence more rainfall can occur over the center of the city compared to the outside. And therefore, you can expect more heavy rainfall in the city areas as compared to the rural areas. So this is just a study by Kistwal and etc. You can find that in the left-hand side diagram, you can just look at in the bottom. So this is the ratio of heavy rainfall events to the total rainfall events. So what is happening actually, there is a sharp increase you can find out along with the population density. If the population density is increasing, you can find out that how the ratio is increasing. That means if a city has got more population density, then you can expect more occurrence of heavy rainfall events. Okay, so therefore the rural area does not show much trend in rainfall activity, but urban area, if you just look at, you can find that there is an increasing trend in rainfall activity, especially the heavy rainfall, that is 70 millimeter per day rainfall.
Now next point comes, what will be the implications? If heavy rainfall increases in the urban areas, the drainage system, which was built up, say, for example, 50 years ahead, that will not have the capacity to manage that water, and hence there will be runoff, there will be standing water, and hence there will be flooding, urban flooding. Similarly, if it is a hilly area, the city is in the hilly area, there can be cloudbursts, there can be the landslides, mudslides, and mudslips. And if it is a coastal area, for example, Mumbai or Chennai or Kolkata, and then of course there will be accentuated by the coastal floodings, etc. So all these cities, therefore, are more vulnerable because of this rising impact of the global changes. Now, if there is a large-scale rainfall, for example, usually whenever there is a low-pressure system or depression or a cyclone, there will be a large-scale rainfall. But that means an area of about, say, 300 kilometer to 300 kilometer may get the heavy rain or continuous rain for 2 days or 3 days. So at that time, what happens actually, it is called as a rainstorm. A rainstorm is a large-scale rainfall event occurring at least for 2 days, and amount of rainfall becoming more than 25 centimeters and over a larger area. And that leads to riverine flooding usually. And if you look at the rainstorm which occurs in the country, usually it occurs in the Indo-Gangetic plains and the central part of the country where you've got all the major rivers, starting with Mahanadi to Ganga and Brahmaputra, etc. So therefore, the rainstorms cause the floods. And if you look at the trend in rainstorms, what you find actually, the number of rainstorm events are increasing over the period of time. And hence you can expect more floods in the coming years. Or at present, already this is the past data. This is based on past data, we find that rainstorm events are increasing and hence floods are increasing. Now, if I just look at frequency of floods then, whether it is matching with each other or not, yes, the top diagram is the frequency of floods. What you find actually that the frequency of floods are increasing in recent years from 1985 onwards to 2019. And at the same time, if you look at the droughts, what is happening actually? So number of droughts are also increasing, if you just look at. So please remember when I showed you two diagrams initially, because of the rise in temperature, there will be shift in mean and also there will be shift in variability. So because of the shift in mean, it can lead to the more frequent heavy rainfall events, etc. And similarly, there can be more variability. That means there can be floods and droughts. So both floods are increasing and also droughts are increasing in the recent years. If I compare, for example, after 1960 and after 1960, these two periods, if I compare, we find that the mean is slightly higher in the recent times for the droughts. And this drought is measured by the SPI, that is precipitation index that we consider. But so this is aerial extent of droughts. Now there is another significant weather which is called the killer, and that is the cyclone, and it has a notorious record. And if you remember Bangladesh cyclone in 1970, Bhola cyclone, it was a cyclone which crossed near Bhola Island in Bangladesh, South Bangladesh, and 300,000 people died. So I was a member of that notorious record keeping in the WMO expert group. So we found that this is the worst record in any disaster. So that is the worst record. So that was the case. So this area is very prone for these tropical cyclones, which causes loss of lives. But however, over the period of time, the early warning has improved and hence number of deaths are decreasing. We have been able to manage the tropical cyclone so far very well, and that notorious record has been erased. Now, but still, if you look at the trends, what you find actually, the global trend is that, top one is the global trend in tropical cyclones, that if you find out the different category, you might have read the USA defines the category 4, category 5 cyclones, etc. So category 4, category 5 cyclones, if you just look at, there is increase in global population proportions. That means frequency of intense cyclones, intense hurricanes are increasing over the globe. But if you look at the total number of cyclones, it is decreasing or remaining same. So total number of frequency of cyclones is about 80 over the globe, it is remaining same. But frequency of intense cyclones are increasing. Same is the case over North Indian Ocean. If I just look at total number of frequency is decreasing. Bay of Bengal is also decreasing or remaining same. But if I consider the intense cyclone, like extremely severe cyclones with a wind speed of 150 kilometers per hour or more,
then in Arabian Sea, the frequency is increasing. Okay, so these are the first diagrams. So for Bay of Bengal, there is no increase, there is all decreasing trend of intense cyclones. But if I look at the Arabian Sea, and then of course there is an increasing trend. And further, if you just look at the increasing trend only in the extremely severe cyclone storms, both pre-monsoon season and the post-monsoon seasons. Now let us consider the landfalling cyclones, cyclones which really affects the population. It crosses the coast. The cyclones, if it dissipates over sea, actually it affects the biotic life, it affects the marine community, fishery community, shipping, etc. But if it crossing a coast, it affects the major losses. So that if you just consider what you find actually, that the frequency of landfalling cyclones in the globe are, if you consider the total, that is there is no change, but small scale cyclones, it is decreasing, intense cyclones, it is increasing. That means the same thing. If intense cyclones are developing more over the sea, it is also crossing the coast more. Now over the, our North Indian Ocean region, if I just look at that, landfalling cyclones is decreased over the years. It has not increased. Now, this is the case of the landfalling cyclones over different coastal areas. For example, the top one is the North Indian Ocean border countries. What you find that similar case, just like globe, smaller cyclones like cyclone storms, severe cyclone storms, it is not increasing, it is rather decreasing. But if you consider the extremely severe cyclone storms, super cyclone storms, it is increasing. This is the case in both east coast and west coast. Okay, now let us see the another impact of this imbalance. So this is the case of the sea surface temperature. As all of us know that there are always a source and a sink. For example, carbon dioxide, there are various types of sources. Human beings are one of the source, and because we exhale carbon dioxide, if population density increases, the amount of carbon dioxide reduced, released to the atmosphere also increases. Then deforestation also causes the sources, etc. And industries, surface transport, etc. We know the sources. Now, then where is the sink? Where does the carbon dioxide go, and where it will dissipate, and who will absorb it, so that balance will be maintained in the atmosphere? The ocean is a major sink. Okay, so ocean absorbs the carbon dioxide, or 40%, you can say it is absorbed. So what happens actually if ocean absorbs carbon dioxide? If ocean absorbs carbon dioxide, the acidification increases. The water is becoming more acidic. That will show in some other sites. But at the same time, the sea surface temperature also increases. So SST, just like land surface temperature I showed you, now this is the sea surface temperature. Now this is global sea. Now if you just look at, there are three areas I have shown you. One is the polar sea, the top diagram. There also you find that there is a rise in sea surface temperature, trend is 0.017 degrees Celsius. And if you look at the second part, that is the CSIR current, that is in the Pacific Ocean, that is one of the worst heating zone. There also it is increasing. The trend is 0.024. And third point I have shown you in the Arabian Sea. The Arabian Sea, if you just look at it, is 0.019. So it has been identified two specific areas. One is the CSIR current area, that is in the Pacific. Other one is the Arabian Sea area, especially the Eastern Arabian Sea, which is showing abnormal rise in sea surface temperature. So what will happen actually? It will have many impacts. It will have the impact in frequency and intensity of cyclones. It will increase the frequency and intensity of cyclones. It will have impact on the acidification. It will have impact on the biotic life, that is marine life, and so many. So it is not limited only to the surface. If you go to the subsurface layer, even up to say 700 meters, there also you'll find that the sea surface, the temperature is increasing. Now let us take the subsurface layer. I've just shown here up to 250 meters down. So what you find actually, all are rising trend. Even as you go down, the trend is more stiff, and everywhere the temperature is rising. Even sea surface temperature trend, whatever it was, the yellow line, the 250 meter you see, it is crossing that and it is going up. That means the heat content, which is absorbed. The ocean is a major absorber of the heat energy. Whatever energy we release, it is absorbing, because heat capacity of water is quite high, the maximum. Therefore, all these energies are getting absorbed, and hence it is getting warmer. And this warming is not limited to the surface, but also to the height up to 700 meters. So if it happens, so just think about the fish and many which are also we consume so many things.
So there is a blue economy which is going to be affected by the imbalance in weather. Now, what happens to sea rise? Now, if the temperature increases, sea surface temperature is increasing, what will happen then? If we know, if you remember the Boyle's law, if Charles' law, if you just remember gas laws, what happens actually? If the temperature increases, that means the volume will increase. That means the sea water is expanding. If the sea water expands, what will happen then? The height of sea level will increase. So this is just a thermal expansion. Okay, this is one thing. One thing is the thermal expansion. So because of thermal expansion, sea surface will rise. But at the same time, because of the rise in temperature, the ice is melting. For example, all the rivers which are going from Himalayas towards the Bay of Bengal, so there is increasing melting of ice and the glaciers, and therefore the retreating of glaciers. As a result, the input water is also going towards the Bay of Bengal. So therefore, also the sea level will rise. The third point is that more fresh water is also going. So there is a stratification of the sea surface. The North Bay of Bengal, if you just go, there will be more stratified, because here you have got the colder water going down and warmer water at the top. So there is a stratification. There are different strata of water at the head Bay of Bengal. It will affect the salinity. It will affect the bioculture, the biolives. So there are various impacts, but however, sea level rise, if I just look at, there is an average of 3 millimeter per year rise in the sea level globally. Now, but if I just look at Asia, for example, North Indian Ocean, it is 3.7 millimeter. So that means our sea is rising more rapidly as compared to the global seas. And Pacific Ocean is 3.68. So we are just competing, just like I told you, the Arabian Sea and Kuroshio Current area. There also we have got a higher, here also in the sea level rise, we are just competing with each other. You may say that only 3 millimeter rise, what is there actually? It is not much. Yes, it is not much. It will not have any impact on the regular day. But the case when you have some kind of a cyclone approaching the coast, for example, the cyclone approaching Andaman Nicobar Island, the cyclone approaching Mumbai, or cyclone approaching the Chennai. At that time, the sea level rise also not same everywhere. In the different city areas, it is different. And these 3 millimeter will amplify the storm surge which is coming up. And then because of there will be interaction of sea level rise and this storm surge, and it is proved that there will be 10 to 15% increase in storm tides or the storm surges because of this global impact, or because of the impact of the global warming. The another point I just want to say that if I just compare different periods, you just see here, that is 1993 to 2023, 2021, you just what you find actually, that you see 2.1 millimeter per year, it was 93 to 2002, that decade. It became 2.9, now it is 4.5. Even if you are telling that it is 3.7 over the entire time period, but really in the recent time it is 4.5 mm per year from 2013 to 2022. Of course, these are all satellite estimation, they are subject to air, but it gives a broad picture that there is an accelerated rise in sea level. Similarly, if you just consider sea ice, if I consider sea ice, you know that we see what is happening. Antarctica में जो हो गया हमारा क्या है इसमें? क्या Arctic में क्या हो गया तो हमारा क्या है? But it is not like that. If you just remember the butterfly effect, I think Lawrence gave that theory. If a butterfly fluffs the wings in Africa, it can have the impact on weather in India or in USA, because all entire ecosystems are connected with each other. A small disturbance anywhere, we of course know that. A gravitational force also, we know that all forces are unified theory. If you just look at all forces are interacting. So anything we are doing here, that has the long-term impact over the entire ecosystem. So Arctic Sea, if you just look at, you see how Arctic Sea is, sea ice is decreasing, rapid decrease in Arctic Sea. That means there is melting, okay? There is melting. Arctic Sea area is decreasing, that is there is melting. So what will happen then? It will increase the sea level. So therefore, sea level is rising. And Antarctic sea ice, if you just look, okay, it is not, but in recent years, if you see Antarctic sea ice, it is also decreasing. Now let's look at the glaciers. If I just look at the glaciers, what you find actually, this is a reference glacier, and then you can see different types of, there are different studies, and based on that you can find out the uncertainty, but all these studies are indicating that there is a decrease in glaciers. That means area of the glacier, or you can say that there is a retreating of the glaciers.
So therefore, what will happen then? It will increase again the river flow systems, and the hydrological cycle will be affected, and it will have also impact on the global weather. For example, we know that Eurasian snow cover is a contributor towards Indian monsoon. If you've got more snow cover, it is poorer monsoon. With less snow cover, it is more monsoon. Therefore, if there is a decrease in glacier, decrease in sea ice, a decrease in ice in the Himalaya and Eurasia cover, then certainly it will have the impact on the large-scale monsoon pattern and others. This is the study for Tibetan Plateau, that is Himalayan area, what is happening to the glaciers. Of course, there are different types of glacier retreats. If you consider Western Himalaya and Eastern Himalaya, you will find that there is a different rate of decrease in the retreats. Okay, so this is the snow cover extent. That is also, so you see snow cover extent is also decreasing. That means snow cover is decreasing. That means again you are not getting that support from the snow. Now, with all these changes, so what happens to us actually? If I just compare that CO2 concentration is increasing, that means additional greenhouse effect and radiative forcing. As a result, you have got the warmer land, warmer ocean, and warmer atmosphere, and it is leading to melting of the cryosphere. These are the direct impacts. And as a result, what we are finding actually, we are getting ocean acidification. We have got the sea surface temperature, ocean heat content is also increasing, glacier mass is decreasing, sea ice content is also decreasing, sea level rise is increasing. So, and all these will have the effect on the global circulation patterns. The global circulation, that means atmospheric circulations, the flow of air, the flow of water, ocean current also will be affected because of all these. So, it will slow down the global thermohaline circulations. Jet stream will weakening. Jet stream, you know that this is a, if you just go about say 12 kilometers height above this area, you will find very strong wind. It is called as more than 60 knots. That means more than 120 kilometers per hour. That is called jet stream. So this jet stream will weaken because of all these phenomena. El Nino and southern oscillation that we know, we read it in the paper, that will also be affected. So by that way, there will be also high impact on the extreme weather, like say heat waves, cold waves, fire, droughts, flooding, marine heat waves, tropical cyclones, coastal erosions, etc. Many people in the coastal area say that our village is lost because of the erosion. So that is also rising. And what will happen to the society? It will lead to the rising poverty, flood insecurity, health issues, water scarcity, damaged infrastructure, rising inequality in the society, displacement or migration, then ecosystem collapse, biodiversity, and conflict. Of course, there could be the international conflict because of this. Now, if you just look at, for example, the mangroves, this is another example I'll just tell you. So there are mangroves in different parts of the globe, but if you just look at the mangroves in Indian region, it is the major mangroves is near the West Bengal, North Odisha, West Bengal, Bangladesh coast. These are the mangrove area. And I've just put one rectangle there. So that rectangle is the decrease in mangrove forest area. The yellow one, that is near China, you can find out that is increase in mangrove forest area. So mangrove forest area near Sundarbans are decreasing. So it is a concern. So, so that is more highlighted in the diagram near Bangladesh coast. You will find that more it is decreasing. Okay. So forest cover, if you just look at, yes, we have been very successful. The forest cover, you see for India, has increased. Okay. So because of social forestry or whatever it is, we have increased. But there are many countries where the forest cover is also decreasing. Now, if you just look at the health issues, what is happening actually, the malaria cases, of course, it has decreased. There are many interventions. We have come up with various types of eradication problems and prevention problems also. So malaria is in check almost, you can say. But still, you see, the millions of people, more than 1 million people are getting affected by malaria every year. So dengue has come up recently, and perhaps it is taking the shape of other fevers. And you see the number of cases, the dengue is increasing over the year in Asia. Okay, so that's what, okay, I have just tell that what will happen in the projected change. Projected change means mean will shift, and hence accordingly the record hot weather will be there, much more hot weather we can expect. And rainfall, if I just look at the probability of heavy rainfall will increase, and probability of light rainfall will decrease. Okay, so what will happen to the atmospheric circulation pattern? If you just look at circulation pattern, what happens actually, we all of us know that
because of the sun direct heating, the equator area gets heated, more heated. Now, over the period, what is happening actually, the temperature is rising, and this equatorial heating will shift northward. It is shifting already, and by 2100, that red zone, what you find, that is called as thermal equator, or it's called as intertropical convergence zone, where two types of wind merge with each other because of the maximum heating. So if that happens, that means the ITCZ or thermal equator shifts northward. What will happen? That means heating zone is shifting northward. Now earlier I was telling you that heating is increasing, but again I am telling now the heating zone is shifting, and heating zone will shift by about 5 degrees towards the north by 2100. So what will happen by that time? That means the area which was getting maximum rain and the maximum heating, that will be shifted towards the north. So it will cause, for example, it is coming towards near Sri Lanka right now, it will come. Now you can imagine what will be its impact on Sri Lanka and South Peninsular India if heating comes to so near to our area. So similarly during monsoon season, what will happen? That actually usually monsoon trough runs around 25 degree north. So it will reach towards 3. That means more rainfall will be there in the Himalayan foothills, and hence more cloudburst and more floodings, so many things we can expect. So therefore, it will have large-scale impact not only in terms of the atmospheric circulation, but also in terms of the severe weather. Similarly, with respect to the vegetation, similarly with respect to the livelihood of the people. The areas, for example, Sri Lanka was getting higher rainfall because of that location. Now it will shift, for example, towards the South India. So what will happen to Sri Lanka? What will happen? So therefore, it will lead to migrations. It will happen to displacement, it will happen to conflict also. So there are so many repercussions because of this change in the environment. Now, if I just look at the disasters which are caused by the natural hazards and their impacts, what you find that flood is the major hazard for the globe, that is 33%, and followed by windstorm, that is cyclones, etc., 27%, and there are other diseases like droughts, epidemics, earthquakes, etc. So, in different periods you can find out. Similarly, you can consider loss of lives. The loss of lives has been maximum because of the droughts. Of course, you may not find in India because India is a developing country now. We do not find the famine. But there was a period earlier where we have the famine, and people died because of the famine. But now that is not the case. Therefore, you don't find. But you just go to economic losses. You can find that yes, there is a huge loss because of windstorms. Cyclones still, the number of deaths has decreased, but the loss of property due to the cyclones are still quite high. It is 43%. Now, if you consider Asia, that is the world case. In Asia, also almost similar case. You can find out different. The number of deaths is 30%, for example, windstorms, and loss of lives is 25%. And here you can find 19% is the economic loss. So why economic loss is less here? Because Asia people are not so developed. The number of countries, if you look at Asia, is quite large, and they are not developed, just unlike the Europe and USA. Therefore, the loss of property is less here. So whatever it may be, so I'm just coming towards the conclusion that yes, you can expect more frequent, more intense storms and cyclones, not the more frequent cyclones, more intense storms and cyclones. Heat waves are expected to be more frequent, more intense and longer. Air pollution, there will increase in level of ground ozone and hence more allergens. So therefore it will have the health impact. Okay. So ozone has various types of impacts. In the upper troposphere, that is stratosphere, if you just look at it, it is affecting the ozone hole, you know, all these things. But if you go to the lower troposphere, it is a health problem. If the ozone concentration increases in the lower troposphere, it can lead to nausea, it can lead to the breathing problems, and there will be many diseases associated with our lungs, etc. Similarly, if you just look at air pollution also, with the rise in temperature, air pollution also increase because the dust, the ground dust also will be elevated, and it will increase the air pollutions. The rapid glacier melting, it can lead to landslides, flash floods, and reduced water availability. Disturbed rainfall patterns can lead to more droughts, more extreme precipitation events, floods, and water supply. Warmer temperature can have the warmer minimum and sea level rise. For example, I will tell you warmer temperature. We know there is an optimum temperature for occurrence of malaria. Okay. So if the temperature changes, therefore, in somewhere where malaria was not occurring, there malaria will occur. In somewhere where malaria was occurring, there may not occur, or it may change with respect to season. So, for example, malaria, usually we get malaria during rainy season. Now, this is the time where malaria population will be more affected, but it may shift because of that. So, sea level rise will lead to inundation, saltwater intrusions, and loss of
lands. Okay, so these are some of the projections by various regional modeling. It shows that 1 in 20 years hottest day is likely to become 1 in 2 years event. Of course, after this heat wave event this year, people told that 1 in 3 years, now it is 1 in 30 years, now it is becoming 1 in 3 years. Okay. Similarly, the Delhi precipitation, that also 1 in 20 years annual maximum Delhi precipitation, now it will be 1 in 5 years precipitation. Similarly, the maximum wind speed, even the frequency is not increasing, maximum wind speed also likely to. So like that, there could be different types of, okay. So I'll just this is, I'll just skip it, the floods and droughts, what is happening. Just look at the various, these are the major river basins of the country. So what is found that there are certain river basins where you will have rainfall and runoff more, and there are certain ocean basins where runoff will be less also because of this thing. And then crop is a major problem, as India is an agricultural country, as all of us know that CO2 concentration is increasing. So what will happen to photosynthesis? Photosynthesis will increase because photosynthesis occurs in the presence of carbon dioxide. More the carbon dioxide, more is the heating, temperature, sunlight, and hence your you can expect, you may say that the food production will increase, but not like that. Food production will not increase. Because of the impact of global rise in temperature, the food production will decrease by 10 to 15%. That is the estimate. Because it is not simply the rise in temperature and carbon dioxide, but also there are the complete chain, root zone, soil temperature availability, soil moisture availability. So like that. So we have to, therefore, there is a priority globally. So we should take into consideration agriculture, disaster risk reduction, water, health, and energy. These are the 5 areas where the entire global community is concentrating to mitigate the adverse impact of the climate change. Okay, in that regard, we in the country also gearing up. I am just talking about the early warning system. We have a seamless forecasting system and warning system in the country to address to all this adverse impact of the climate change, leading to increase in frequency and intensity of extreme weather events. The small scale extreme weather events like thunderstorms, lightning are increasing. And perhaps you might be knowing that number of deaths due to cyclones has been reduced significantly, but number of deaths due to lightning is increasing. Every year about 3,000 people die because of lightning. So priority is now that not only the large scale weather systems, but also the small scale weather systems should be targeted, how people should be aware. And I think NISCAIR can play a big role to reduce the loss of lives because of the small scale weather events like thunderstorms, hailstorms, squalls, and also property loss because of that. So this is the entire warning systems. It is a very well-defined warning system. India is second to none as far as monitoring, forecasting, the early warning is concerned with respect to the severe weather, especially cyclones and heat waves. These are examples, successful examples, how the India has been able to mitigate the adverse impact. But still there are certain challenges, as I told you, the small-scale weather events like thunderstorms and lightning, and we are working together. And I am sure that the time will come when all of us can work together to not only provide the forecast and early warning, but also to work upon that. That is, early warning and early action can mitigate all these adverse impacts. And for that purpose, we have introduced the impact-based early warning system. Each and every severe weather now carries a message about what is the damage expected or what is the adverse impact expected and what action to be taken by the general public and disaster managers and various stakeholders. But for that purpose, we have to work together. A participatory collaboration with all agencies is essential. We are working towards directions. And certainly, as we have been able to minimize the loss of lives to the major disasters, we should be able to minimize the loss of property. That is the major goal in the world and also for India. So thank you very much for giving me an opportunity to speak. Thank you, sir, for this insightful lecture. It took a long time. I am pleased to inform you all that CSIR-NIScPR has brought out Environment Special Issues of Science Reporter and Vigyan Pragati, which are focused on the challenges being faced by the environment. We are privileged to have these special issues released by Dr. Mrityunjay Mahapatra ji. We request you, sir, to do the honors, please. I request everyone to please join. Okay.
So one by one. थैंक यू एवरीवन। कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए मैं डॉक्टर मनीष मोहन गोरे जी से धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध करती हूँ। सभी को नमस्कार। धन्यवाद प्रस्ताव का अर्थ होता है कि हम लोग कार्यक्रम के समापन की तरफ हैं और कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है। तो इस दायित्व के लिए मैं उपस्थित हूँ। आदरणीय निदेशक महोदया प्रोफेसर रंजना अग्रवाल, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग और CSIR-NISCPR परिवार के सभी साथी सदस्यों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हम डॉक्टर महापात्रा जी के आभारी हैं कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से NISCPR के इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे आयोजित कार्यक्रम में अपना समय निकाल के हमें अनुग्रहित किया और इसके लिए हम सर के बहुत आभारी हैं। और डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी का जीवन और उनके शोध कार्य लाखों विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए प्रेरक है। और डॉक्टर महापात्रा साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कैसे कहलाए, इसके पीछे एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। बात कोई 51 साल पहले की है। 1971 में उड़ीसा में चक्रवात आया था और उसमें लाखों लोगों की जान गई थी। तो उस उड़ीसा के चक्रवात में डॉक्टर महापात्रा जी का गांव भी प्रभावित हुआ था उड़ीसा में, और प्रॉपर्टी, जानमाल, मवेशी, खेत सब कुछ डैमेज हुआ था। उस समय डॉक्टर महापात्रा जी 6 साल के एक छोटे बच्चे थे। तो उस छोटे नन्हे बालक के मन पे, 6 साल की उम्र का बालक, उनके मन के गहराई में ये बात बैठ गई कि ये जो साइक्लोन है ये बहुत ही नुकसान पहुंचाता है और मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूं क्या। तो उन्होंने मन में एक संकल्प बनाया कि मैं बड़ा होकर कुछ ऐसा करूंगा कि साइक्लोन के इफेक्ट को देश दुनिया के लिए कम किया जा सके। तो उन्होंने जो मन में एक रिजोल्यूशन लिया था, एक संकल्प लिया, तो बाद में जब वो बड़े हुए, अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई, तो उन्हें पता लगा कि एक मेट्रोलॉजिस्ट बनके, मौसम वैज्ञानिक बनके ही इस उद्देश्य को, इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। तो उन्होंने उस दिशा में अपनी शिक्षा, अपना अनुसंधान किया और आगे चल के मौसम वैज्ञानिक बने, साइक्लोन एक्सपर्ट बने। और उन्होंने जो एक संकल्प लिया था कि जान माल की जो हानि है, जो डैमेज है चक्रवात से होने वाला, उसको मैं कम करूंगा। तो उसके लिए इन्होंने एक साइक्लोन प्रेडिक्शन मॉडल बनाया और उससे लाखों की संख्या सैकड़ों में आ गई और उसमें करीब 3 या 4 दिन पहले प्रेडिक्शन किया जा सकता है ताकि जो लोकल अथॉरिटी है उनको कन्वे किया जा सके वो प्रेडिक्शन के द्वारा मैसेज को, ताकि वो अपना अलर्टनेस, जो उनके अलर्ट्स हैं, वो इशू कर सकें। तो डॉक्टर महापात्रा जी ने उस मॉडल को डेवलप किया और जो 1999 में, 1999 में फैलिन आया था उड़ीसा में, उसमें मरने वाले लोगों की संख्या करीब 10 हो गई थी, जो कि लाखों में थी 1971 में, जब ये 6 साल के थे। तो ये 2013, तो ये एक दर्शाता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाउ दीज टू टूल्स कैन चेंज आवर लाइव्स, और इसका क्या प्रभाव है। तो इस तरीके से डॉक्टर महापात्रा जी का जीवन हमारे साथ जो ACSIR के विद्यार्थी और दूसरे शोधार्थी जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक प्रेरणा है कि किस तरह से एक कोई व्यक्ति कुछ सोच के पूरे मानवता के लिए काम कर सकता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सहारा लेके। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के आयोजन और उसके मार्गदर्शन के लिए हम निदेशक
CSIR-NISPR के आभारी हैं। मैं संस्थान के सभी वैज्ञानिकों और स्टाफ साथियों के लिए आभार प्रकट करता हूं। संस्थान की IT टीम, कैंटीन स्टाफ, प्रशासन और वित्त विभाग, पॉपुलर साइंस डिवीजन, प्रिंट एंड प्रोडक्शन डिवीजन, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी टीम, राजभाषा विभाग, खासतौर पर श्रीमती मीनाक्षी गौड़ और श्री अनिरुद्ध तिवारी, ACSIR के विद्यार्थी और श्री हसन जावेद खान सर, मुख्य वैज्ञानिक और प्रमुख पॉपुलर साइंस डिवीजन, और सुश्री सोनाली नागर जिन्होंने पूरे कार्यक्रम का संचालन और संयोजन किया। इन सभी लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस एक ऐसा अवसर है जो हम सभी को यह याद दिलाता है कि हमारा हर एक कदम पर्यावरण को बचाने के लिए होना चाहिए। ब्रह्मांड में करोड़ों आकाश गंगाएं हैं और हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी में करोड़ों ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी केवल एक ही है जिस पर हम सभी रहते हैं। आइए हम सब अपनी पृथ्वी और इसके पर्यावरण की देखभाल का संकल्प लें। केवल हम मनुष्य ही इस ग्रह और इसके पर्यावरण को बचा सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आप सभी से यह अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। I now invite you all to join for high tea in canteen. Thank you, everyone.